Assalamualaikum everyone, welcome to another session of the Y Live. आज का हमारा जो लाइव सेशन होगा that will be around World Oral Health Day. Since today 20th March is World Oral Health Day. हम ये लाइव सेशन इस वजह से लाए हैं ताकि जनरल पब्लिक को जो भी सवाल हों ओरल हेल्थ के हवाले से, ओरल हाइजीन के लिहाज से, वो हमसे पूछ सकें. तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया इस वजह से जाता है ताकि एम्पावर कर सकें लोगों को नॉलेज के साथ, टूल्स के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ कि अच्छी गुड ओरल हेल्थ रखें. ओरल डिजीज़ मेजर कंसर्न है काफ़ी सारे ममालिक के लिए और वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं लोगों की लाइफ्स पे. काफ़ी बार दांतों के दर्द या दांतों के पेन की वजह से डिस्कम्फर्ट, सोशल आइसोलेशन और लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है. इसकी ओरल हेल्थ का ताल्लुक अंडरलाइंग कंडीशंस, सीरियस हेल्थ कंडीशन से भी है. काफ़ी बार कुछ दिल के अमराज जो होते हैं वो काफ़ी बार दांतों के थ्रू भी जा सकते हैं, एंडोकार्डाइटिस वगैरह. और ज़रूरत नहीं है कि हर किसी को सफ़र करना हो इससे. सो दिस इज़ लार्जली प्रिवेंटेबल एंड कैन बी ट्रीटेड. So today we have Dr. Rabania Rehan. She is a practicing general dentist for the past 14 years and currently she is working at Patel Dental as a senior dentist, and her interests include cosmetics, conservation and restoration. So without further ado, let's have her in. Assalamualaikum, Doctor. Hello. Welcome, Sam. Thank you, Maham, for a good introduction and the good start. Thank you for having me over. Yeah. So, Doctor, आज का live session, since it's just going to be 30 minutes, so I'm going to try and cover as many questions as I can. तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा the importance of dental exams. होते क्या है और कितनी वक्फे की बात करवानी चाहिए? ठीक है. Dental examination basically, is like getting a vaccine done. ठीक है ना. जो importance vaccination की है हमारी lives में, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, dental exam I think holds a similar importance and significance in our lives. Dental examination में असल में ये होता है if you get regular examinations so we can nip the problem in the bud. ठीक है ना. अर्ली स्टेजेस में we can just find out कि whatever is happening, क्या मसला है, क्या problems हैं, क्या issues हैं, so we can just diagnose them at the right time. And also dental examination are usually followed with a proper full mouth scaling and polishing. जो cleaning होती है और polishing करवाते हैं लोग. So I think the best and ideal time is to get checked after every 6 months. You can get your cleaning and polishing and dental examinations done at the same time, like within 6 months or at least once a year. Yeah. तो डॉक्टर डेंटल एग्जाम्स में आपने कहा कि पॉलिशिंग होती है. सो रूट कनाल्स और वो सारी प्रॉब्लम्स भी क्या डेंटल एग्जाम्स के थ्रू हमें पता चल सकती हैं एज अर्ली एज पॉसिबल? आई मीन बिल्कुल बिल्कुल. डेंटल एग्जामिनेशन का पर्पस ही यही होता है कि हम जो है ना वो पूरा जो है ना वो थरो एग्जामिनेशन करें, like which includes checking out any lesions inside the mouth. गम से लेके गम डिजीज है, देयर आर केरियस लीजन्स या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हमें सारी जो है वो डेंटल एग्जामिनेशन में इट्स लाइक द फर्स्ट स्टेप बेसिकली, जिसमें हम अपना जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो प्रायोरिटाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द चीफ कंप्लेन ऑफ द पेशेंट, तो हम उसको एड्रेस करते हैं अकॉर्डिंगली. ओके. सो डॉक्टर, अगर हम डेंटल एग्जाम करवा रहे हैं तो कौन से अर्ली साइंस हैं डेंटल ट्रबल के जो डेंटिस्ट फॉर एग्जांपल हमें बताएंगे कि दिस इज़ कंसर्निंग, एंड उसके बाद फिर प्रोग्रेशन क्या होता है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हैं, जैसे अब गम्स की इन्फ्लेमेशन है तो वो हमें उनका डिफरेंट चेंज इन कलर नज़र आता है. जैसे नॉर्मली अ नॉर्मल हेल्दी गम लुक्स लाइक नाइफ एजेस होते हैं बिटवीन द टीथ, और कलर इज लाइट पिंक, थोड़ा सा टी सैल्मन पिंक कलर होता है. बट इफ दे आर इन्फ्लेम्ड तो वो आप खुद भी नोट करेंगे कि विद इन द पीरियड ऑफ टाइम इफ यू डोंट गेट योर ब्रशिंग एंड क्लीन आउट द प्लाक एंड टार्टर व्हिच इज बिल्डिंग अराउंड द गम मार्जिन्स, तो वो रेड होने लगते हैं. सो दैट्स अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन बेसिकली. दांतों के टेक्सचर की बात की जाए तो अर्ली साइंस इज जो कंसर्निंग होगा कि इट स्टार्ट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद डीकैल्सिफिकेशन. दैट्स लाइक द फर्स्ट स्टेप
when the active decay starts to happen and starts to eat up your tooth basically. तो अगर केरियस लीजन्स हैं या ब्राउन स्टेनिंग है जैसे, सो दैट्स ऑफ कंसर्न कि कोई कैविटी ना हो. Attrition hai if the teeth are worn down bit because of whatever reason, Yeah. grinding है, clenching है, या जो भी आपकी habits हैं, dietary habits, तो उसकी वजह से enamel erosion अगर obvious है, तो दांतों का जो physiology है is disturbed. So that's concerning. तो वो हमें अपने early symptoms में dental examination में जैसे अब हमें पता लगता है, तो we can always tell and inform the patient कि भाई this is happening, तो आप उसको address करें and it should be taken care of. Yeah. And doctor, what about bleeding? Like usually, I don't know if it's apparent on dental examination, but काफी बार at home when we're brushing our teeth, तो bleeding होती है. So is that an early sign? I'm sorry? Yeah, I'm asking. Usually, while we're brushing our teeth, काफी बार bleeding होती है. So do you think that is a sign? That is an early sign that's indicating some trouble? बिल्कुल बिल्कुल absolutely there could be it's because of a combination of things. If your gums are bleeding, the gums are inflamed, or you are brushing or applying a lot of pressure while brushing and self infliction trauma की वजह से the gums are getting injured and they are bleeding. जी, तो डॉक्टर ब्लीडिंग गम्स यूजुअली अपेरेंट तभी होती हैं जब लोग फ्लॉस कर रहे होते हैं. तो डेंटल हाइजीन के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी बार पीपल अवॉइड फ्लॉसिंग इंटायरली क्योंकि ब्लीडिंग हो रही होती है, दैट फॉलोज. सो इज़ दैट नॉर्मल कि अगर फ्लॉसिंग के ड्यूरिंग ब्लीडिंग हो रही हो, एंड व्हाट वुड यू से इज़ द करेक्ट वे टू फ्लॉस? Maham, it's a myth basically कि हम floss किया अब और उसकी वजह से bleeding हो गई. Most of the time the reason is that people aren't getting their proper scaling done, क्योंकि वो उनको लगता है कि बस हम दिन में 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं, सुबह शाम 2 मिनट तक कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के कर रहे हैं, and our teeth are clean. ठीक है ना, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है मासेस में. और नहीं, हम फ्लॉस करते हैं तो खाली तब ब्लीडिंग होती है, लेकिन हमारे ब्रशिंग में ब्लीडिंग नहीं होती. तो आई थिंक दिस इज जस्ट अ मिथ. फ्लॉस तो हर किसी को करना चाहिए आइडियली आफ्टर मील्स, बट आफ्टर मील्स इज समटाइम्स नॉट प्रैक्टिकल. तो एटलीस्ट लास्ट थिंग एट नाइट आपने करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि गम्स आर ब्लीडिंग और नॉट. क्योंकि जो फ्लॉस हैं, अब हमारे पास वैक्स फ्लॉस आती हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट. आप स्टिक फ्लॉस यूज कर लें इफ यू फाइंड के स्पूल से तोड़ना 12 इंच का स्ट्रिंग, फिर रैप अराउंड योर फिंगर्स एंड मैन्यूवर इट विद योर अदर फिंगर्स इनसाइड योर माउथ इज डिफिकल्ट. तो अब स्टिक फ्लॉस हैं, आप वो यूज करें. एंड लास्ट थिंग एट नाइट बिफोर ब्रशिंग इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट. तो ये तो आपने करना ही करना है. और अगर ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं फ्लॉस के साथ साथ, तो आप डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर स्केलिंग और उसकी ज़रूरत है क्लीनिंग की, डेंटल क्लीनिंग की, प्रोफेशनल क्लीनिंग की, जो कि आपको करवानी चाहिए. एंड फ्लॉसिंग से एक और चीज़ ये होती है कि समटाइम्स द गम्स गेट रिसीडेड over the period of time because of whatever reason. ठीक है ना, age related है, the pressure you are applying with brushing, या inflammation है, tartar है वहाँ पे build up, तो gum recession हो रहा है, या you have got comorbids attached कि diabetic हैं, hypertensive हैं, बहुत fluctuation है. तो flossing से ना it stimulates gum basically. तो at least we can make sure कि we cannot reverse the process of the gums कि वो वापस अपनी जगह पर आ जाए, लेकिन at least we can arrest the process with flossing. Yeah. So Dr. आकाश कुमार शिवकानी asks कि उनका molar teeth जो है वो black हो गया है and he does not eat सुपारी and no sugary foods. So he's asking कि इसका reason क्या हो सकता है? Black हो गया है and there is a cavity probably, and it depends कि कोई pain है क्या नहीं है, तो we should they should get a clinical examination done. फिर dentist जो भी होगा, they are going to confirm the diagnosis via an X-ray, a periapical X-ray, which will show कि how deep is the lesion.
कि उसमें फिलिंग होनी है या इट विल गो टुवर्ड्स द रूट कैनाल, रिस्टोरेबल है, नॉन विल है, तो फिर एक क्लिनिकल एग्जाम के बाद ही पता चलेगा, और एक एक्सरे के बाद के व्हाट नीड्स टू बी डन. Yeah. So, oral hygiene को ही देखते हुए, when we rinse or we use a mouthwash or something, so do you think it causes dryness of the mouth, and does it actually destroy the normal bacteria? Because essentially it's alcohol जो हम मुंह में ले रहे हैं और swirl कर रहे हैं. So, Absolutely. are those actually helpful? Yeah, should we avoid using them? You can use mouthwash, but not the medicated ones. जो regular mouthwash है, just to freshen up the breath, I think you can use those ones. लेकिन जो medicated हैं, जिसमें chlorhexidine है in particular, you can't use them for a long time. It's because एक तो वो आपने खुद ही you answered the question महम कि वो normal flora disturb करते हैं. Also जो chlorhexidine है, if you use it for a longer period of time, so it stains your teeth. तो आप दांत आपने सफाई कराएं और आप हफ्ता 2 हफ्ता भी यूज कर लें, 1 महीना यूज कर रहे हैं और करे जा रहे हैं आप वो मेडिकेटेड माउथ वॉश, तो आपके दांतों में वैसे ही वो स्टेन आने लगेंगे. लेकिन अगर आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट यूज करेंगे, यू कैन यूज इट एज अ माउथ वॉश लाइक योर रेगुलर माउथ वॉश. यू कैन रिंस विद दिस solution every day without interfering or interrupting the normal flora of the mouth. इनफैक्ट ये तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पेन और इन्फ्लेमेशन दैट यू फील इनसाइड योर माउथ के गम्स थोड़े सोर हो रहे हैं, कोई अल्सर आ गया है, या कोई तकलीफ हो रही है गम्स में, आपको लग रहा है थोड़ी सूजन आ रही है, फॉर वट एवर रीजन, तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद सॉल्ट वाटर रिंसेस. थोड़ा सा more than lukewarm, and just a pinch of salt in it, and rinse with it at least 3-4 times for good 10-15 seconds each time. तो आप 3-4 दिन में ही नोट करेंगे कि भाई उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया. Because salt is sodium chloride is a natural disinfectant, and जो हमारा नीम गर्म पानी है, it helps as a it helps in soothing down the inflammation and promotes more bleeding into the inflamed area. तो हमारी बॉडी का जो फाइटिंग मैकेनिज्म है वो बेसिकली it promotes that. तो 2 डबल इफेक्ट हो जाता है इससे, और इसमें स्टेनिंग का भी कोई इशू नहीं है. आप अगर नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के करें, इट्स लाइक अ देसी टोटका, बट इट लाइक हम लोग डेंटिस्ट एवरी नाउ एंड देन विदाउट इन्वॉल्विंग माउथ वॉश अनलेस इट्स रियली नेसेसरी, तो हम तो यही प्रिस्क्राइब करते हैं अक्सर कि भाई नीम गर्म पानी में थोड़ा सा जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड जस्ट रिंस लाइक अ माउथ वॉश. Yeah. So, doctor, how do fillings work? Like when someone goes to a doctor and to a dentist and they tell them कि you require filling. So, what is that doing? और sealants भी जो हैं वो करते exactly क्या हैं in our mouths or on our teeth? Fillings nowadays are like very conservative procedures. Fillings में ये होता है कि filling उस वक्त की जाती है when the nerve is not involved. आपके दांत में कीड़ा लगा है and the nerve area is not involved. The tooth is just sensitive maybe to cold and or maybe no sensitivity at all. So you just clean out the decay or जो भी defected part है of that tooth, and you replace it with a filling material, which are usually resin based materials जो अब white filling materials हम use करते हैं. So they are much more cosmetically pleasing. Also strength wise भी they are getting better over the period of time. वरना पहले तो हम वो डिके रिमूव किया और मर्क्यूरी की फिलिंग करते थे तो वो आधे से ज़्यादा दांत आपका सिल्वर टूथ होता था. लेकिन अब तो with advancements and the materials good quality materials are available now, तो वो फिलिंग में ये होता है कि नर्व का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ज़्यादा, तो हम उसको बिल्कुल क्लीन करते हैं डिके को. जो भी आपका डिफेक्टेड पार्ट है बेसिकली ऑफ द टूथ इज रिप्लेस्ड विद अ फिलिंग मटीरियल, जो भी whatever the dentist choose. Yeah. So, और अभी आपने कहा कि डेंटल एग्ज़ाम में यूजुअली स्केलिंग की जाती है, तो स्केलिंग होती क्या है, कितनी ऑफन हमें करानी चाहिए, और वो डिफरेंट कैसे है टीथ वाइटनिंग में से? मतलब अगर किसी को टीथ वाइटनिंग चाहिए तो क्या वो स्केलिंग करवा ले,
and will that be the solution? ठीक है। स्केलिंग बेसिकली सर्व्स टू पर्पस। एक तो ये होता है कि स्केलिंग से आपका टार्टर बिल्डअप जितना भी है गंक दांतों में लगा हुआ है वो रिमूव होता है, यू नो, एंड और दूसरा है कॉस्मेटिक रीजंस भी, क्योंकि स्केलिंग में आपके सुपरफिशियली जो अल्ट्रासोनिक स्केलर्स हम यूज करते हैं तो उससे स्टेनिंग वगैरह भी, जो टी कॉफी स्टेन्स हैं, स्मोक स्टेन्स हैं, टोबैको स्टेन्स हैं, बीटल नट च्यूइंग से स्टेन्स आ रहे हैं, तो वो स्टेन भी रिमूव होते हैं। तो दो फंक्शंस हैं स्केलिंग के हमारे पास। एक तो फंक्शनल यूज है उसका कि आपकी गम्स के लिए बहुत जरूरी है स्केलिंग करवाना, इवन इफ यू डोंट हैव स्टेन्स ऑन योर टीथ बट यू स्टिल नीड इट। तो एवरी 6 मंथ्स तो ये एडवाइजेबल है कि कराना चाहिए। जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है वो हर 6 मंथ्स का कहती है, लेकिन अगर आपको नहीं कराना तो एटलीस्ट वंस अ ईयर आई थिंक इट शुड बी डन। और वाइटनिंग तो सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, इट्स नॉट गोइंग टू रिमूव योर प्लाक टार्टर जो भी है। Yeah. वो तो हम प्रेफर करते हैं यूजली के स्केलिंग आपने करवा ली है तो सारे आपका स्टेन रिमूव हो जाए, गम्स हेल्दी हो जाए, तो उसके बाद ही हम अपना वाइटनिंग प्रोसीजर करें। स्केलिंग पॉलिशिंग में टीथ डजंट बिकम वाइट, द शेड बिकम्स डजंट बिकम लाइटर, बट क्योंकि वो आपकी जो येलोइश ह्यू होता है प्लाक की वजह से एटलीस्ट दैट्स वाइप्ड ऑफ, तो आपका जो नेचुरल शेड है तो वो ब्राइटनेस आ जाती है बेसिकली आफ्टर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। बट विद वाइटनिंग द टूथ कलर्स बिकम एटलीस्ट 5-6 शेड लाइटर देन योर नेचुरल टूथ। तो that's a difference between scaling and whitening. Yeah. And doctor, quite a lot of times people go for root canal treatment. So root canal treatment hota kya hai, and is it better than having a tooth pulled out entirely? Definitely, it's better than getting a tooth pulled out because it's a conservative procedure. A lot of people have got fear getting the root canal done with their bad experiences. बहुत painful होता है, बहुत ये होता है, and you know, लेकिन you are numb, वो लोकल एनेस्थीसिया आपको लगाते हैं और द टूथ स्टेज इनसाइड योर माउथ बट इट जस्ट बिकम्स डेड, क्योंकि उसका जो हम रूट कैनाल में हमारा जो मकसद होता है वो होता है कि आपकी जो नर्व्स है, इन्फेक्टेड पार्ट है जो टूथ है विच इज मेकिंग योर टूथ पेनफुल और द गम्स पेनफुल या पस पड़ रही है जिसकी वजह से आपके मुंह में, तो वो दांत का जो नर्व एरिया, इन्फेक्टेड एरिया, उसको हम रिमूव कर दें। And you know because the tooth is the source of infection basically, तो वो हम इन source of infection हम basically remove करते हैं, उसको seal करते हैं properly, roots clean होती हैं, sterile होती हैं, disinfect करते हैं उसमें हम, we replace the nerve area जो void बनता है उससे gutter per का points होते हैं जो bio inert points होते हैं basically, फिर filling होती है उसके ऊपर and then we put a crown. So all of this effort is usually to save the tooth so that at least you can, you know, use your tooth and you know you don't have to like pull the tooth out. और फिर अक्सर यही होता है कि people, you know, have the tooth pulled out and you know they don't replace it. So it's better if it can be saved through a root canal treatment, then we should go for a root canal treatment. Yeah. And some other common things that people do is that people clench their jaws और teeth काफ़ी बार grind करते हैं. So क्या dental problems उससे arise करती हैं, और इसका कोई psychological fact है? जैसे I've heard कि लोग anxiety में काफ़ी बार teeth या फिर गुस्से में काफ़ी बार teeth अगर clench करते हैं, या so what does that lead to? Teeth grinding and clenching has become fairly common now. Like every other patients I've been seeing, especially after COVID, जो नहीं करते थे and they were like really calm sort. लेकिन after COVID, I think I've been recommending night guards to pretty much everyone from like younger age group to the elderly age group. और ये बेसिकली यू नो स्ट्रेस ग्राइंडिंग एंड क्लेंचिंग जो है ना वो स्ट्रेस रिलेटेड है एंड इट्स कॉल्ड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन सिंड्रोम। when you unnecessarily write आप unconsciously रात में जैसे आप when you're asleep and you're really stressed out sometimes you don't realize it और आप बिल्कुल clench कर रहे होते हैं अपने जो है ना दांत when you're asleep and you're grinding sometimes
कुछ लोगों का तो ये स्ट्रेस रिलेटेड है, लेकिन कुछ लोगों का बाइट ऐसा होता है, ट्रॉमेटिक बाइट नेचुरली, के जो है वो रात के टाइम बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा होता है, इवन विद द स्लाइटेस्ट ऑफ प्रेशर, यू नो, उनके दांतों में एट्रिजन हो जाती है। एट्रिजन मीन्स कि आपका जो एनामल है वो घिस रहा है बेसिकली, जो हमारे कर्व्स और नेचुरल स्लोप्स और एनाटमी आती है दांतों में, मोलर्स में आप सामने इंसाइजर्स देखती हैं, तो वो जो है एनाटमी डिस्टर्ब होने लगती है ग्राइंडिंग और क्लेंचिंग की वजह से। एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर डाइट ऑल्सो। कुछ लोग बीटल नट्स खाते हैं तो वो अनड्यू प्रेशर पड़ता है, वी आर नॉट मेंट टू chew on betel nuts, तो वो उसकी वजह से भी द टूथ एनामल बिकम्स अफेक्टेड। तो कुछ लोगों के इस तरह के लोग आर मोर प्रोन टू क्रैक्स ऑन द टीथ। तो इवेंचुअली अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए क्रैक्स, तो दांत बिकम्स जो दांत है वो थोड़ा सेंसिटिव भी हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है, so there are lot of chips involved in this, so there are lot of problems which grinding clenching से हो सकती हैं। या if you have these habits of eating betel nuts हैं, या chewing on ice cubes, things like that, तो ये आपके दांतों के लिए it's not safe. So there are a lot of things that you can do. Wear a night guard, take therapy sessions. Most of the time people are like really offended and taken aback, it's a shocker for them कि नहीं हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है। तो but I would recommend कि भाई आप one should take measures to get rid of this situation. It's not easy, but there are ways to solve it. तो आप नाइट गार्ड बनवाएं, डेंटल नाइट गार्ड बनवाएं, आपको थेरेपी की जरूरत है, go for a therapy, and try to minimize your unhealthy habits whatever you have. तो please underlying जो problem है actually उसको sort out करना ज्यादा जरूरी है, ना कि आप जो है वो secondary चीजों पे आप उसको address करें। Yeah. So, डॉक्टर सेंसिटिविटी टीथ की क्या होती है? काफ़ी बार लोग की कंप्लेन जो है वो सेंसिटिविटी भी होती है, रिंगिंग सेंसेशन काफ़ी बार आने लगती है टीथ में। और इज इट रिवर्सिबल? Is it easily reversible, or do people have to just avoid foods throughout their lives? Sensitivity is irreversible, and sensitivity can be caused by number of reasons. दांत में अगर caries lesion है, कीड़ा लगा हुआ है दांत, उसकी वजह से sensitive हो सकता है। आप if you are brushing like really hard, तो उसकी वजह से गम मार्जिन्स के ऊपर क्लीन कैविटीज बन सकती हैं, जिनको हम क्लास 5 कैविटीज कहते हैं, which exposes the root surfaces basically। तो वो that can make your tooth sensitive। तो अगर वो deep है तो उसमें filling हो सकती है, and we can stop the sensitivity। Sometimes it's generalized। तो उसमें भी हम जैसे टूथपेस्ट वगैरह और हमारे पास डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को यूज करने के लिए टू कंट्रोल द सेंसिटिविटी बेसिकली। सो इट्स डेफिनेटली अ रिवर्सिबल प्रोसेस, अनलेस कि जो है वो दांत में इतना इन्फेक्शन है कि वी हैव टू ट्रीट इट विद अदर इंटेंसिव ऑप्शंस। लेकिन मोस्टली इफ checked at an earlier stage, we can deal with it. Yeah. And Dr. My last question for today would be about oral hygiene in general. तो क्या correct तरीका है to maintain good oral hygiene? So optimal way क्या होगा to brush teeth, और कितने frequently हमें brush करना चाहिए, और any other dental tips that you can give us? I think everybody knows कि हमें कितने टाइम ब्रश करना चाहिए। हमें 2 टाइम करना चाहिए ब्रश। प्लीज 2 टाइम ब्रश करें। ऑल्सो feel comfortable brushing whatever way you are brushing, as long as you are brushing all the surfaces exposed in your mouth, लेकिन just gently, don't hold your brush like this, ठीक है ना। इस तरह हमारा जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होते हैं ना आर्म से, वो बहुत ज्यादा पावर आती है हमारे उसमें, तो वो डायरेक्टली हमारे गम्स इंजर करती है। सो डोंट होल्ड योर ब्रश like this, always hold it in a pen grip। इस तरह आप अपनी जान चाहे जितना भी आपको दिल चाह रहा हो कि आप रगड़ रगड़ के करें, you can't apply a lot of pressure while holding the brush like this। So it's always advisable कि आप जो ना रोटेटरी मोशन में करें, both on the outside and also on the inside। तो आप रोटेशंस में करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि that's how our gums are। जैसे अगर आप नेल देखें तो हमारे नेल नीचे से थोड़े से सर्कुलर होते हैं, और हमारे गम्स भी ऐसे अराउंड द टूथ। सो इट्स ऑलवेज नाइस कि आप जो है ना उसको सर्कुलर मोशन में ही करें, बिकॉज दिस इज द एरिया वेयर द मोस्ट ऑफ द प्लाक एंड टार्टर बिल्ड्स अप, ठीक है ना।
brush आप at least do it for at least a minute. A minute is a long time, but brush very gently. Use a soft bristle toothbrush. Also, a lot of people have started using whitening toothpaste. So whitening Yeah. toothpaste, please ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करने चाहिए because they are medicated. They have got lot of abrasives in it, and the abrasives erode the enamel eventually. So once in a while is Oh. okay. तो Yeah. आप once in a while you can use like in 2 weeks आप use कर लें once, या आप जो भी अगर आपका कोई function है, कोई party है, before going that, just to brighten up your smile आप use कर लें, but not on the regular basis. Also Dentonic यूज कर रहे होते हैं, पाउडर्ड टूथपेस्ट जो Yeah. भी है, तो वो पाउडर्ड टूथपेस्ट भी यूज नहीं करने चाहिए, मे बी जस्ट वंस इन अ वाइल. नेवर सेल्फ मेडिकेट और यूज योर सेल्फ ये होममेड जो करते हैं जैसे टोटके बाइकार्बोनेट यूज करते हैं अक्सर लोग विद Hmm. a dash of lemon. I've heard so many of my patients doing it. तो ये नहीं करना चाहिए. आई मीन एवरीथिंग शुड बी इन अ बैलेंस प्रोपोर्शन. ये नहीं है कि आप रोज करें, क्योंकि टूथपेस्ट ऑलरेडी जो आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर होते हैं एब्रेसिव्स, तो आप वो अपना नॉर्मल यूज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू गेट योर टीथ वाइटेंड या थोड़ा सा आप अपना अच्छा सा ब्राइटनेस लाना चाहते हैं, तो मे बी वंस इन अ वाइल यू कैन यूज ऑल द जो भी वाइटनिंग टूथपेस्ट है, या अगर आप बाइकार्बोनेट आपको लगता है विद लेमन हेल्प्स, तो ठीक है, जस्ट टू फ्रेशन अप द स्माइल आप वो यूज करें, बट जस्ट ओकेजनली, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस. Okay. Thank you so much, Doctor. It was really lovely having you. And I learned a few tips and tricks. I didn't know, okay, the whitening toothpaste were so harmful. In fact, I was using them for a long time now. But yeah, thank you for pointing it out, and thank you for joining us. And I'll see you Thank you soon. so much, Maham. It was lovely talking to you, and thank you for being so supportive. Yeah. No, no, no problem. Thank you, everyone. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.